Good morning, everybody. Welcome to the 26th Insight Series, HSSC Insight Series. My name is Shimonti. I'm working with Healthcare Sector Skill Council. Today we have Dr. Harshil Mehta. Good morning, everybody. From Marengo CIMS Hospital. I would like to welcome him today for this session. Today we'll start the session for this, and I would kindly request everybody to be on mute, please, so that there is no hindrance during the session. So before I start the session, I'll just introduce Dr. Harshil Mehta with you. Dr. Harshil Mehta is the zonal in charge emergency medicine, Marengo CIMS Hospital, Ahmedabad. He's heading the emergency department since 10 years, and he has a vast experience in this emergency background. He is managing all kinds of medical and surgical emergencies, all life-saving procedures, managing stroke patients within window period and its timely treatment, trauma patient management as per international guidelines, and management of cardiovascular emergencies according to the latest guidelines. He has a expertise in all kinds of medical and surgical emergencies, trauma, poisoning, academics, education and training, and community awareness. Today, the topic that we have with us, it is fundamentals of medical ethics. He would be speaking on the same. So now I would hand over to Dr. Harshil Mehta. Please, sir, take over the stage now. Thank you very much, Simanti, for your kind words. And thank you for the HSSC for inviting me on having discussion with our participants on the topic of fundamentals of medical ethics. Am I audible to everyone? Yes, sir, you are audible. Fine. And my screen is visible? Yes, sir, your screen is also visible to us. Yeah. So आज का हमारा topic है the fundamentals of medical ethics. See, we doctors are learning a lot regarding the medical part, clinical part, but ethics is what that is not being taught during our MBBS days or residency days. So I thought let's have a discussion on fundamentals of medical ethics, क्योंकि हम जो भी पेशेंट देखते हैं वो हर एक पेशेंट पे ये एथिक्स लागू पड़ता है एंड जब हम एथिक्स के साथ काम करते हैं तो वो हमारी प्रोफेशन का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है and each and every patient wants a doctor to be ethical. So let's discuss in next half an hour to 1 hour on medical ethics. So Charak, the ancient physician and हम बोलते हैं कि father of Indian medicine, he said that no other gift is greater than the gift of life, and the same is applied even today also. So there is a trust between patient and a physician. सो वो ट्रस्ट एक चीज है जो कि हमेशा हमारे प्रोफेशन के साथ रहती है. डॉक्टर, ईच एंड एवरी डॉक्टर हैज एन एथिकल ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट and continually up to date in their clinical knowledge. And the technology nowadays that is with us is guiding us for more and more accurate diagnosis and up to date treatment and to save life
more and more. So what is medical ethics? क्या है medical ethics? So in simple term, if we say, then it is a discipline that guides physicians in navigating the moral complexities of clinical practice and scientific research. क्योंकि हर एक केस सिंपल नहीं होता है, कुछ कुछ केसेस में कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, एंड व्हेन अ डॉक्टर इज स्टक इन द कॉम्प्लेक्सिटीज, तो वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन हमेशा हमेशा एथिक्स को कंट्रोल में कर कर ही किया जाना चाहिए, एथिक्स को कंसिडर करके ही किया जाना चाहिए. सो दिस देयर आर फोर मेडिकल एथिक्स दैट वी विल डिस्कस, बट वो मैं जो भी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा कंसिडर किए जाने चाहिए. सो व्हाट इज एथिक्स? सो एथिक्स, आई मीन डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि इट इज अ मॉरल प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स of a conduct. And when it's a medical ethics, then for doctors to have a standards of conduct with the patients. So morality is also one of the part of medical ethics. So what we consider good, right, and just in our actions towards others, that is called morality. And for medical ethics specifically, it's an applied branch for the doctors to analyze that how we behave, how are our professional values towards patients. So ethics, the language came from the Greek, Latin, and now in modern definition, if we say, then it is just a, So your voice is breaking. yeah, just a minute. So in modern ethics, it is basically a philosophical beliefs and practices concerned with all these things, that whatever is right and wrong in thought and action of a doctor. So that is being considered as ethics. So it's an applied branch of ethics, the how we practice in clinical medicine. And whenever there is a case of confusion or conflict, जहां पर हम confused हो जाते हैं that what would be the good or right for the patient, उस टाइम हमारे पास ये रेफरेंस फ्रेमवर्क होना चाहिए, जो रेफरेंस फ्रेमवर्क हम देख के जो भी कंडीशन में हम क्रिटिकली कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, वहां पर ये हमें गाइड कर सकता है. सो व्हाई मेडिकल एथिक्स मैटर बेसिकली फॉर द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप. क्योंकि पुराने जमाने में तो डॉक्टर्स को गॉड माना जाता था, लेकिन आज के जमाने में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो गया है. सो द ट्रस्ट बिटवीन डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स आर नॉट as good as in the past. So it's a foundation for doctors to stay connected with the patient. So one of the most important part is doctor-patient relationship. सेकेंड इज नेविगेटिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स. सो हमको ये रेडी करता है जब भी कोई डिस्प्यूट होता है फैमिलीज के साथ, पेशेंट्स के साथ, बिटवीन फिजिशियंस एंड अदर केयर वर्कर्स, तब ये हमें गाइड करता है दैट हाउ शुड वी प्रोसीड. एंड इट्स अ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हमें हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद करवाता है, एंड जब भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तब हमें क्या करना चाहिए, दैट वी बेसिकली कम टू नो. So there are four basic pillars of medical ethics: beneficence, non-maleficence, autonomy, and justice. So ये चार चीजें हैं जो कि पिलर्स हैं मेडिकल एथिक्स के. हम एक हर एक चीज डिटेल में जानेंगे. So autonomy is basically respecting patient's right to make their own informed decisions. So जो भी पेशेंट डिसाइड करता है उसको हमें रिस्पेक्ट करना है. Beneficence is whatever we do, it should be in the best interest of the patient, क्योंकि हमें उनके वेल बीइंग को प्रमोट करना है. नॉन मैलेफिसेंस, दैट इज अबव ऑल, प्लीज डू नो हार्म. सो हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी चाहिए जिससे पेशेंट को इंजुरी हो और अननेसेसरी हार्म हो. And lastly, justice. So whatever we do, we should be ensured in fairness, equity, and impartiality in the distribution of care. तो कोविड में हमने देखा कि जस्टिस वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब हमारे पास दिक्कतें होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स की,
वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन की, उस टाइम हम फेयरनेस दिखाए ताकि हर एक पेशेंट को जिसको भी रिक्वायरमेंट है उसको अच्छे से ट्रीटमेंट मिलता है. So we'll begin with autonomy. Autonomy is basically individual's inherent right to self determination. पेशेंट को क्या करना है वो पेशेंट ही डिसाइड करेगा. सी हमारा काम है उनको बताना. डॉक्टर्स मस्ट एक्टिवली प्रमोट पेशेंट्स ऑटोनॉमी. हमें उनको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देनी है, उनके डेलिब्रेशन को सपोर्ट करना है, एंड वॉट एवर थेरापेटिक चॉइसेस वी हैव टू इन्फॉर्म देम. And then the patient would decide उनके capacity of to make informed, rational, and uninfluenced decision regarding their own personal health and freedom. So a patient's ability to exercise autonomy is a meaningful indicator of both mental and physical well-being. अगर patient खुद decide करता है कि उसको क्या करना है, तो वो अच्छे से उनकी treatment को follow कर सकता है. But उसके लिए हमें क्या चाहिए? सो व्हाट वी वांट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट. सो कंसेंट एक इट्स अ वेरी बेसिक फंडामेंटल कि हम हर एक चीज के लिए कंसेंट लेते हैं. आगे हम एक मेडिकल केस देखेंगे जिसमें कंसेंट का ही एक केस है. सो ऑटोनॉमी से ही ये कंसेंट का एक फंडामेंटल आया है. इट्स अ लीगल फाउंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑटोनॉमी. So autonomy is the ethical and legal foundation of informed consent. So patient would tell us what to do and patient would give consent to a doctor कि उसको क्या करना है. And patient has all the rights to refuse treatment. मान लो कि एक patient को appendicitis हुआ है and there are two options. One is medical treatment and second is surgical. We say that surgery is indicated, but if patient doesn't want to go, then we cannot ask the patient to go for surgery forcefully. That is patient's choice whether patient wants to go for medical treatment or a surgical treatment. If patient denies surgical treatment, even after all the explanations of indication, complications, but still patient doesn't want to go for surgery, it is his right as a autonomy. So we have to respect the autonomy. So patient has the right to choose among alternatives. So doctor का काम क्या है? Doctor has to give a medically feasible option to the patient, and then patient would decide what to do. Regarding laboratory tests, so choice of diagnostic blood tests and pathology investigations, radiological investigations like X-ray or CT or MRI or ultrasound, medicines. So what kind of pharmaceutical options and formulations patient have, and surgery, deciding between surgical approach and electing conservative management. So for all these things, patient has a right to choose what to do and what not to do. As a doctor, we can give options, but patient would decide what to do and what not to do. So the consent is utmost. Now there are some times the choices are conflicting. डॉक्टर कुछ और बता रहा है एंड पेशेंट कुछ और चूज करने के लिए बोल रहा है. सो एज अ डॉक्टर वी हैव टू गिव देम ऑल द इंफॉर्मेशन. So we can counsel. So physician's role is to counsel the patient that what is right for the patient, but we cannot override the patient choices. So we have to see whether patient is competent or not. So competence and informed consent remain the key criteria for upholding conflicting patient choices. So patient should be competent enough to decide, and patient should be able to give consent regarding what he wants to do. So whenever there is conflict between patient and the relatives regarding these things, then in those cases, patient's choice is the priority. So we can counsel them, but we cannot override them. So there are a few instances where the patient's autonomy is limited. So the examples are incapacity. So if patient is in altered mental status, if patient is less than 18 years of age, and if patient is having cognitive impairment, then in those cases, the patient's choices can be neglected because patient is not in capacity to decide whatever is right and good for him. Second is best interest override. So when acting on patient's preference would cause clear harm to the patient, then in those cases, the physician may override or overweigh the strict autonomy in the patient's best interest.
Third thing is societal constraints. So in legal, whenever the legal or the government says that it should be declared, then it should be declared. So the autonomy can be constraints in such cases where law is advises us to do a violation of patient's autonomy. So law is the highest. So if law says that do not accept the patient's autonomy in certain cases, likewise we have to declare certain diseases to the or notify the diseases to the government. So where their patient's autonomy doesn't abide us not to declare. सो उन सारी चीजों में अगर कोर्ट ऑफ लॉ बोलता है कि यू डिक्लेयर और यू एक्सपोज द पेशेंट और यू the rights in laboratory investigations, then in those cases autonomy doesn't implied on us. So our ethical obligations are respect autonomous decisions. So a physician is obliged or obligated to honor medical decisions. So act intentionally. The decisions are deliberate and clearly expressed on the side of patients. Patients should be informed about everything. Patients are free to decide, and patients should be of sound mind without about their illness and medical choices. Respect non-autonomous patients. So who lack autonomy, as we discussed, that children and minor. So they lack autonomy or they lack capacity regarding deciding their own choices with severe illness and cognitive decline and under influence of medication or sedation. In those cases, it has been declined. Now, how to respond as a doctor to those things? So when patients are not fully self-direct, देन हमें क्या करना है हमें ऐसी करेक्टरिस्टिक प्रेफरेंसेस और वैल्यूज को अंडरस्टैंड करना है एंड देन whosoever is coming with the patient relatives उनको साथ डिस्कस करके देन पेशेंट की कंपैशन एंड डिग्निटी को मेंटेन करते हुए हमें सही डिसीजन लेना है सो दैट इज वेयर अ नॉन ऑटोनोमस पेशेंट्स हाउ वी ट्रीट थर्ड थिंग है ऑनर पेशेंट्स ट्रस्ट सो पेशेंट जब भी डॉक्टर के पास आता है देन दे ट्रस्ट अस कि हम जो भी करेंगे उनके भले के लिए ही करेंगे उनके बेनिफिट के लिए ही करेंगे सो व्हाट यू हैव टू डू इज अवॉइड मिस रिप्रेजेंटेशन ठीक है हमें कोई भी इन्फ्लुएंस में आकर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना है व्हाट वी हैव टू डू इज हमें एक्यूरेट ट्रूथफुल एंड नॉन नेगोशिएबल इंफॉर्मेशन पेशेंट को पास करनी है सेकेंड कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है सो पेशेंट की जो भी इंफॉर्मेशन है हम उनको बताएंगे कि योर द इंफॉर्मेशन वुड बी वेरी मच कॉन्फिडेंशियल विथ अस एंड वॉट एवर वी सी आवर कमिटमेंट जो भी है वो कमिटमेंट हमें फॉलो करना है सो की प्रोमिस अगर एक बार हमने बोल दिया एंड दूसरी बार आए तो पेशेंट हम अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो ट्रस्ट टूट जाएगा सो वॉट एवर कमिटमेंट्स मेड टू पेशेंट्स रिगार्डिंग एनीथिंग फॉलो अप इंफॉर्मेशन केयर हमें वो सारी चीजें कंसिस्टेंट रखनी सो ब्रीच अगर इन चीजों में होता है ब्रीच इन एनी ऑफ दीज एरियाज विल शो डिसरिस्पेक्ट टू पेशेंट्स एंड देन वो ट्रस्ट एक टूट जाएगा सो ये हो गया फर्स्ट पिलर दैट इज पेशेंट्स ऑटोनॉमी नाउ सेकंड पिलर इज बेनिफिसेंस सो वॉट एवर वी डू वी शुड बी एक्टिंग फॉर द पेशेंट्स गुड ठीक है हम जो भी करेंगे वो पेशेंट की वेलबींग को प्रमोट करने के लिए ही करेंगे दैट इज द सेकंड पिलर ऑफ मेडिकल एथिक्स ये मैटर क्यों करता है बिकॉज व्हेन पेशेंट वॉक इन टू द क्लिनिक वो एक वल्नरेबिलिटी के साथ आता है ठीक है वो एक दिक्कत तकलीफ के साथ आता है ठीक है तो उस टाइम हमें हमारी जो भी एक्सपर्टीज है वो एक्सपर्टीज हमें ऑनेस्ट गाइडेंस के साथ हमें बतानी है एंड देन हमें उसकी जो भी तकलीफें हैं होल हार्टेडली वी हैव टू फाइट विथ ऑल द प्रॉब्लम्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ पेशेंट्स health. So making beneficence not just a principle for us, but it should be beating heart of the healthcare ethics. क्योंकि हमारा काम ही है पेशेंट की वेल बीइंग को प्रमोट करना. So beneficence is the second pillar. So what we have to do is promoting patient's interest. So एक तो पेशेंट के पर्सपेक्टिव को जानो उनको दिक्कत क्या है. Because India is a very diversified nation
and the cultural values are also different. So we have to respect to those cultural values also, along with fears and goals of care. Address misunderstanding regarding the health or some other parameters related to health. So उनके जो भी concerns हैं उसको clarify करो, उनकी जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है उनको करेक्ट करो, and then give the correct information and clinical recommendations. Persuade and negotiate their misbeliefs and respect the final decision. So beneficence supports but doesn't override the autonomy. Beneficence हमें करना है, but it will not again override the autonomy. So make sure that you act in the best interest of the patient, but do not override. Third one would be non-maleficence. So again, very important, do no harm. So that is primum non nocere. That is, first, do no harm to the patient. So, non maleficence is the fundamental obligation to avoid causing harm to patients, whether through action or inaction. So, in practice, how do we balance this? So, weigh the risk and benefit of every intervention before proceeding. Generally, I give a simple example, like एक पेशेंट आया आपके पास, उसको फीवर है, तो फीवर के लिए जनरली हम क्या देते हैं? Paracetamol, right? Now, giving paracetamol without asking allergy history, and patient develops allergic reaction. And giving do not giving paracetamol if patient is having allergy history. So you can differentiate the difference. अगर पेशेंट आपको पेशेंट ने पैरासिटामोल दे दिया और उसको एलर्जी थी तो क्या होगा? एंड अगर आपने पहले से एलर्जी हिस्ट्री पूछ ली और पेशेंट ने बता दिया कि मुझे तो पैरासिटामोल से एलर्जी है, तो आपने पैरासिटामोल नहीं दिया, ठीक है। अब पहले केस में क्या हुआ? नॉन मैलेफिसेंस ब्रीच हो गया, क्योंकि हमारे एक्शन से पेशेंट को हार्म हुआ, बिकॉज इट इज अवर प्रिंस एथिक्स और इट इज अवर ड्यूटी टू आस्क द एलर्जी हिस्ट्री, बट हमने नहीं पूछी और पेशेंट को पैरासिटामोल दे दी एंड पेशेंट को एलर्जी रिएक्शन आया, सो दैट इज नॉन मैलेफिसेंस का ब्रीच होना। सो बिकॉज ऑफ आवर एक्शंस पेशेंट को हार्म हुआ। सो इन योर प्रैक्टिस यू कैन जॉट आउट कि क्या क्या हो सकता है। Withhold treatments where potential harm overweighs expected benefits. ठीक है। अब पेशेंट आया, पेशेंट को स्टेमी है, हार्ट अटैक है और हमें एंजियोग्राफी करनी चाहिए और हमने बिकॉज ऑफ सम रीजन एंजियोग्राफी नहीं की, सो दैट इज विथहोल्डिंग ट्रीटमेंट और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई। सो दैट इज अगेन नॉन मैलिफिसेंस बिकॉज आवर इनएक्शन से पेशेंट को हार्म। Guard against negligence, incompetence, and carelessness in clinical decision making. So that is very important because negligence हमेशा तभी आता है जब because of our inaction patient को harm होता है, and because in that case we breach the pillar of non-maleficence. So what is the difference between beneficence and non-maleficence? Beneficence versus non-maleficence. So like beneficence demands actively doing good. Non-maleficence demands avoiding harm. Okay. So these are related but distinct obligations. So beneficence acts to promote the patient's well-being and best interest. Otherwise, on the other hand, non-maleficence is refrain from actions that cause unnecessary harm. Sometimes the most ethical choice is not to act. ठीक है, काफी बार ऐसा आता है कि पेशेंट की डेथ हो गई थी एंड फिर भी उसको वेंटिलेटर पे रख दिया, ठीक है। सो आई मीन ऐसा होता नहीं है, बट अगेन एलिगेशंस तो होते हैं। सो दिस थिंग्स यू कैन put into the boxes of beneficence versus non-maleficence, ठीक है। So the third pillar is non-maleficence, ठीक है। So first pillar was autonomy, second pillar was beneficence, third pillar is non-maleficence, and the fourth one is justice. So the fairness in care, take care. So as per Article 21 of Indian Constitution, so all Indian citizens are having fundamental right to health, and being doctor
in our Hippocratic oath also, we take that obligation to treat all Indian citizens without considering their paying capacity, their caste, their culture, anything. So, as a doctor, we have to be fair, we have to follow equity and impartiality in the distribution of healthcare resources, benefits, and burdens across patients and society. So it is our right, or it is our duty to give treatment to all patients without any consideration. So the parts of this is the uh, resources and care. So resources, like I said, in COVID, we saw the lack of enough infrastructure. So distributive justice, in which the fair allocation of scarce resources like organs. So that is why for organ transplantation, we have NATO and SOTO. So in states and as well as the national registry, and then as soon as we get organs, we divide the patients according to criticality, and then we give organs because the organs are scarce. ICU beds like in COVID, medications, so remdesivir, and a lot of medications during COVID, we saw that the national guidelines were coming very routine frequently just to have a good justice or good fairness in patient care. And then procedural justice like fair processes for decision making, ensuring consistent, transparent, and unbiased procedures for all patients. So, government as well as doctors, we both have to combine together to find this kind of justice for all Indian citizens. And that we do, fortunately, good thing. So, that is in emergency cases also, we see that, first the 24 hours the emergency care should be given without any consideration, and that is the government law. So government is doing good for the patient care, and doctors, we have to give or play our role also in giving justice in medical care. So in practice, what we have to do is, so we have to treat patients equitably regardless of race, gender, socioeconomic status, or background. Allocate scar resources, like we said, organs, ICU beds, and medication based on the need and clinical criteria, and not to do favorism. Okay, and ensure equal access to quality care across all population. Why it matters? Because again, trust in the healthcare, and second, physicians bear a responsibility not only to individual patients but to society as a whole. And third thing, in court of law, not doing anything for a patient and doing anything for a patient, if you want to prove, then justice is again a defense for a doctor, that whatever he has done as a medical ethics on the basis of justice. So, for example, in organ transplant allocation, strict protocols are followed. And then if we don't give organ to one patient, and if we are giving organ to another patient, then we can prove that we have followed the principle of justice by dividing patients as per the clinical criteria, and we have not influenced any patient, or we have not given favor to any patient who receives a life-saving organ. So this is again, these all four pillars are always in the favor of doctors if they follow it. So in trust me, if you read the cases of the negligence or allegation against doctors, then always you will find any of the principles acting in favor of patients. Either it could be autonomy, or it could be beneficence, or it could be maleficence, non-maleficence, or it could be social justice. So each and every patient you have to treat based on all these four principles. So कब एक physician comply नहीं कर सकता? So there is always a boundary, right? So what first we have to do is we have to do prioritize the patient.
सो अगेन इन मेडिकल नेग्लिजेंस व्हाट वी से इज दैट डॉक्टर को तीन राइट दिए गए हैं। सबसे पहले एक तो पेशेंट को चूज करना, दूसरा क्या ट्रीटमेंट देना है वो चूज करना, और कैसे ट्रीटमेंट देना है वो चूज करना। सो अ डॉक्टर कैन ऑलवेज से नो टू पेशेंट व्हेन देयर इज नो केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है। सो पेशेंट प्रायोरिटाइज करना अगेन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट। देन उस पे एथिक्स लगाना, दैट व्हाट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स वी आर फॉलोइंग। उसके ऊपर लीगैलिटी को वेरीफाई करना, एंश्योर एक्शंस कंप्लाई विथ लॉ और नॉट। एंड जब ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट आती है तब डिक्लाइन करना, बिकॉज वी कैन नॉट वायलेट एनी ऑफ द रूल्स। So a physician must never violate their fundamental personal values established on all these four ethical practice module. And we have an obligation to transfer care. So if we cannot carry out patient's care, then we withdraw from the case and facilitate the transfer of care to your colleague that who can treat the patient. Likewise, I am an emergency physician. I cannot treat a cardiac patient or MI patient. Then I have to transfer my care from having an emergency stabilization. We transfer. Okay, now it is not my job. It is part of this job to carry out the further process. So always transfer care if you are not able to do proper justice to the patient care. If you cannot work in the beneficence of the patient, if you are uh, liable to do some kind of non-maleficence, then transfer the care. So always this is in favor of the physician. So based on all these four principles, we have to decide our own practice, the model of our own practice. So there is an interesting case, a critical case, or a landslide case in the medical history, that is Samira Kohli versus Dr. Prabha Manchanda. So it's a Supreme Court case and a landmark case when a patient's autonomy or the matter of consent comes into the picture. So we'll discuss this case. So now, what is the reality behind the case, the incident? So it was the case of 1995. Samira Kohli was the patient, and she was having DU with this dysfunctional uterine bleeding. So she went to Dr. Prabha Manchanda. Now, Dr. Prabha Manchanda gave some treatment and advised some investigations. Now, after investigations, they decided to go for laparoscopy to find out the diagnostic laparoscopy to find out that what is there inside. So the Samira Kohli agrees for the diagnostic and operative laparoscopy, a limited defined procedure with a clear scope that it is just a diagnostic laparoscopy. Okay. So laparoscopy was carried out by Dr. Pramawan Chanda, and during laparoscopy, they found out that clinically the hysterectomy is advisable or indicated. So junior of Dr. Prabha Manchanda came out from the operation theater. She discussed with the mother of Samira Kohli regarding the requirement of hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. So she agrees, the mother of Samira Kohli agrees, okay, go ahead. So she gave consent, and then during the same anesthesia, Dr. Prabha Manchanda performed the hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy. So clinically, it was indicated. There is no doubt about it. So clinically, doctor was not wrong. But this surgery happened without patient's knowledge and consent. So what happened after that? Samira Kohli woke up from anesthesia, and after a couple of days, she came to know that this kind of surgery happened, and it was a permanent alteration in the reproductive health of the patient because patient was unmarried, and it's a life-changing consequence. And it was not an emergency also, so she never authorized it. And then she filed a case against Dr. Prabha Manchanda. So in 2003, the NCDRC dismissed the case because clinically it was indicated.
and there is nothing wrong by doctor to do a hysterectomy in that case. So Samira Kohli was not satisfied with the judgment, so she went to Supreme Court. In 2008, Supreme Court overturned the decision of MCDRC, and Supreme Court said that any surgery without the consent of the patient, so that is called unauthorized surgery, and any unauthorized surgery constitutes the assault or battery under Indian law, regardless of the physician's intent. See, here intent was good. The intent was good that hysterectomy was advisable, and any doctor would go for hysterectomy. But the process of carrying out was not good. So the Supreme Court in 2008 ruled out that, affirming that a competent adult patient, not a parent or guardian, holds exclusive authority over their own body. So here autonomy was reached, and it was not legally sufficient to do that surgery. So make sure that whatever you do, it should be with the patient's consent. What Dr. Prabha Manchanda could have done is that, if it is advisable, then stop the surgery, come out from the OT, ask the patient when she wakes up from the anesthesia that, see, this is the picture and this should be done. And when Samira Kohli gave consent, then second time patient should have been taken into operation theater and could have done. So this was the legal thing. Ethically, clinically she was right, but ethically she was not. And that's why she was given punishment. So the principle of the real and valid consent is that the full disclosure of whatever is going to be done, the scope is binding within the words of the consent, but in emergency only it is exception. So only a genuine, immediate medical emergency justifies acting without explicit informed consent. Otherwise, consent is required, required, required. It is the patient's fundamental right to give consent regarding their own body. So the case was the lasting legacy in the medical profession, and it permanently shifted the Indian medical ethics from physicians' paternalism to shared patient-centered decision making. पहले डॉक्टर्स को ऐसा था कि हम बोले वही करना है, पेशेंट को क्या पता चलता है, हम जो बोले वो सही है. बट नाउ इट इज नॉट देयर. अब क्या हो गया? इट इज द शेयर्ड पेशेंट-सेंटर्ड डिसीजन मेकिंग. सो बॉडीली इंटेग्रिटी जो कि है वो पेशेंट का फंडामेंटल राइट है, और आप एक उस पे इंसिशन भी नहीं रख सकते विदाउट पेशेंट्स कंसेंट. So a transparency, explicit communication, and documented consent is required before doing anything on patient. So four pillars. Again, just to have a conclusion, that medical ethics is not a checklist. It's a living framework for us. And these principles work in concert, guiding physicians through decisions that are rarely straightforward and always consequential. हम जो भी करते हैं उसकी consequences होती ही है, ठीक है? तो वो हमेशा हमें याद रखना चाहिए. So what is the take home from my side? Every decision lives at an intersection. हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो ये चार पिलर के बीच में आके अटक जाता है, एंड देन वी डिसाइड दैट व्हाट इज गुड फॉर द पेशेंट. पेशेंट की जो भी चॉइस है, जो की आवाज है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए. Good and harm, both sides of the same scale. So weigh that what is for the betterment of the patient, and ethics applies equally to all Indian citizens without any exception. So this is all from my side. Uh, I hope I was clear to everybody. And कुछ तो आप यहाँ से घर लेकर जाएंगे कि हमें कैसे प्रैक्टिस करनी. Thank you so much, Dr. Harshil, for this insightful session. And I'm sure people might have taken something
not something, but quite a bit of things back home, because these ethics, medical ethics, are very important and they should be aware of all these things. So before we end the session, we'll have a question answer session. So if Okay. anybody is interested in asking any questions, किसी के पास अगर कोई भी question है वो please पूछ सकता है. I may ask one question, sir, that हाँ, what is the difference between medical ethics and medical law? And can an action be legal but still unethical? yeah, so that's what I said, that ethics is the fundamentals. So law can be something else, but ethics is fundamental. So अगर आप चाहें तो इसमें ऐसा हो सकता है कि मेडिकल एथिक्स इज द मॉरल प्रिंसिपल्स फॉर द डॉक्टर्स जो कि कुछ कर रहे हैं फॉर द राइट ऑफ द पेशेंट, बट लॉज आर द लीगल रूल्स बाय द गवर्नमेंट फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू फॉलो. तो एक्शंस मे बी लीगल बट अनएथिकल. जो इसमें हुआ कि अगर हिस्टेरेक्टोमी की गई है तो वो एक हिसाब से क्लिनिकली लीगल है, बट अनएथिकल था बिकॉज पेशेंट्स की ऑटोनॉमी ब्रीच हुई है. लाइकवाइज कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि कोविड. ठीक है, अब कोविड में क्या हुआ कि हमें डिस्क्लोज करना था कि इतने पेशेंट्स को कोविड है, तो उसमें कॉन्फिडेंशियली तो ब्रीच हो गई, बट इट्स अ लीगल थिंग बिकॉज गवर्नमेंट और लॉ ने हमें बताया कि आपको उसको बताना है कि किस किस को कोविड है. तो उसमें क्या हुआ कि इट वाज अ लीगल एक्शन बाय द डॉक्टर बट अनएथिकल था बिकॉज पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें ब्रीच हो रही थी. उसी तरीके से काफी बार ऐसा होता है कि कुछ कुछ जो नोटिफाइड डिजीजेस हैं उसमें भी हम करते हैं कि पेशेंट की कंसेंट के बगैर हम गवर्नमेंट को बोल देते हैं कि इसको ये डिजीजेस हैं. सो इट्स अ लीगल थिंग फ्रॉम अस डॉक्टर्स, बट वो अनएथिकल है क्योंकि उसमें पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है. ओके, तो मतलब ये है कि अब देखिए, लीगल एंड एथिकल जो मेडिकल एथिक्स की चीजें हैं, ये सबको पता होना चाहिए. अब काफी लोग होते हैं जो लाइक पता नहीं है उनको, वो जस्ट दे जस्ट टेल ऑल दोज थिंग्स. सो हाउ टू एजुकेट दीज पीपल? लाइक इज देयर एनी प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन एजुकेट दीज पीपल, और एनी कंसेंट जब ये लोग, अब लोग तो कंसेंट फॉर्म भी, काफी लोग होते हैं वो लोग तो, सब पेशेंट्स तो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो कंसेंट फॉर्म अगर साइन भी करते हैं तो उनको पता नहीं चलेगा कि क्या मेडिकल एथिक्स के हिसाब से क्या कंसेंट है. लेकिन उनको कोई तो होगा ना कि जैसे जब आ रहे हैं तो उनको समझाए कि हाँ भाई नहीं बोल सकते या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होगा प्रोविजन? हाँ, सो जी, कंसर्न की अगर हम बात करें तो मान लो कि किसी कोई पेशेंट आया जिसको इंग्लिश नहीं आती एंड कंसेंट फॉर्म सारे इंग्लिश में लिखे गए हैं. सो एथिकली एंड लीगली दोनों बार एक ट्रांसलेटर होना चाहिए जिसकी कंसेंट में भी साइन होनी चाहिए कि मैंने ट्रांसलेट करके बताया है. पेशेंट कोई भी फॉर्म में साइन करता है दैट मीन्स पेशेंट हैज अंडरस्टूड द थिंग. ठीक है, सो लीगली हम ऐसा कर सकते हैं कि जो भी पेशेंट आता है उसको सारी चीजें बताना तो चाहिए ही चाहिए कि ये चीजें हैं, बट जब भी वो कंसेंट फॉर्म साइन करते हैं अगर उसकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में नहीं है तो हम एक ट्रांसलेटर की भी उसमें साइन ले सकते हैं जिस जो सारी चीज जो लिखी हुई है वो पेशेंट को ट्रांसलेट करके बता सके. इट कुड बी पेशेंट्स रिलेटिव्स, इट कुड बी एनी ऑफ द स्टाफ फ्रॉम द हॉस्पिटल, बट अल्टीमेटली पेशेंट को सारी जब भी साइन करे उससे पहले सारी चीजें बताना जरूरी है. एंड कोर्ट ऑफ लॉ में तो ऐसा ही होता है कि अगर एक बार पेशेंट ने साइन कर दी दैट मीन्स पेशेंट हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग. ठीक हाँ है, जी. हाँ. और कंसेंट में भी बहुत कुछ इलेबोरेटिव होता है कि ऑप्शंस क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, रिकवरी प्रोसेस क्या होगी, ये सारी चीजें वो कंसेंट फॉर्म में होनी चाहिए. ओके, हाँ, बिकॉज इट इज लाइक समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज आई टोल्ड दैट ऑल यस, पीपल आर नॉट नॉट वेरी एजुकेटेड एंड दे कांट अंडरस्टैंड थिंग्स. मेडिकल टर्म्स होते हैं कुछ, ट्रू, लेकिन समझाना बहुत जरूरी होता है. तो ये हेल्थ, एब्सोल्युटली. हाँ जी. अब ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं वो पेशेंट का जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो कैसे मेंटेन कर सकते हैं? लाइक आजकल के टाइम पे तो आपके हेल्थ केयर, लाइक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर रिकॉर्ड, सोशल मीडिया, एआई के जमाने में वो किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं इसको? सो सबसे पहले जो भी पेशेंट
की डिटेल्स हैं व्हाट्सएप पे शेयर करना आजकल हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप से काफी ज्यादा लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। सेकेंडली, जब भी कोई केस डिस्कशन होता है टीचिंग एकेडमिक्स के लिए, तो उसमें से पेशेंट आइडेंटिफायर्स हम निकाल देते हैं, और जो भी HIS है, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम या EMR है, वो सारी चीजें हम पासवर्ड प्रोटेक्शन में रखते हैं ताकि कोई भी उसको एक्सेस ना कर ले। उसके अलग अलग राइट्स दिए जाते हैं कि अगर इमरजेंसी का पेशेंट है तो ही मैं देख पाऊंगा, कोई ICU का पेशेंट मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि आई एम नॉट वर्किंग इन द ICU। सो वो मेरे मुंह मैं भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होने के चांसेस रहते हैं। एंड जो भी EMR होता है, उसमें से अगर हम कोई भी पेशेंट का फोटोग्राफ या वीडियो लेते हैं, तो अगेन नाउ डेज इट्स प्रैक्टिस कि सोशल मीडिया पे रखने से पहले भी हम कंसेंट ले लेते हैं कि ये सारी चीजें हम सोशल मीडिया पे रख सकते हैं। सो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि काफी वाइडली अभी यूज हो रहा है, बट थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना चाहिए उसको यूज करने के से पहले, जिसमें हम डायरेक्टली पेशेंट के फाइल्स एंड रिकॉर्ड्स उसमें न लगा दें, ताकि वो चीज कहाँ कौन से कहीं पर भी यूज हो जाए। सो डू नॉट पुट एनी डायरेक्ट फाइल्स इन द सोशल मीडिया और द AI प्लेटफॉर्म्स। सो जस्ट बिकॉज की टेक्नोलॉजी आ गई है, दैट डजंट मीन कि वो सारी चीजें यूज करना एथिकल है। तो ये एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए। Done. So, last question that I have is, what ethical principles should guide decision making when healthcare resources like ICU beds, ventilators, blood products are limited? तो दैट जस्ट इज द फोर्थ पॉइंट। सो दो एग्जांपल मैंने दिए कि एक तो कोविड के टाइम में जो हुआ वो, एंड सेकंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी जो हो रहा है कि हम फेयरनेस देखते हैं कि कौन सा पेशेंट को रिक्वायर्ड ज्यादा है। तो प्रायोरिटी हमें क्लिनिकली सिनेरियो देखकर हम बना सकते हैं, एंड वॉट एवर रिसोर्सेस वी यूज दैट रिक्वायर फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड कंसिस्टेंट डिसीजन मेकिंग के हिसाब से ही हो। ऐसा नहीं कोई भी रैंडम चीज हम एक दिन ये यूज करें, दूसरे दिन ये यूज करें, तीसरे दिन ये यूज करें। इट शुड बी प्रोटोकॉलाइज्ड एंड डॉक्यूमेंटेड फॉर ऑल हॉस्पिटल्स। सो जैसे कि हम इमरजेंसी में ट्रायज करते हैं, सो वो ट्रायजिंग ऑल्सो इज इट्स बेस्ड ऑन द जस्टिस। जैसे कि इमरजेंसी में मेरे पास 5 ही बेड है पर 15 पेशेंट आ गए, तो मैं क्या करूं? तो वो चीजें हमें देखनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन द ट्रायज। सो ट्रायज क्राइटेरिया इज ऑल्सो फिक्स्ड। So likewise, the justice is the thing that we can use during our clinical practice. Thank you so much, Dr. Harshil, for your insightful thoughts. And I hope people have taken back a lot of things with them now. So we'll end the session now, and we'll join back again for the next session next month. And Dr. Harshil, thank you so much for having this webinar with the HSSC. And hopefully we'll have a and we will have another session with you on some another topic, which is as per your core, and surely that will be also a very insightful for us. Thank you so Sure. much, sir. Thank Thank you. Thank you. Have a nice day. Thank you. Thank Have you a nice all day for to you too. participating. Thank you.